Good morning, student. Today, again, I will discuss the chapter 8 triangle and its properties, in which we will discuss value based question. The question is, due to storm and rain, a tree broke and fell on the road, which prevented the people and vehicles to pass by. A group of children decided to solve the problem. They lifted the broken part and put it aside. All were very thankful to these brave children. आंधी और पानी में एक पेड़ टूट करके रोड पर गिर गया, which prevented the people and vehicle to pass by. A group of children decided to solve the problem. See the tree. ये पेड़ यहाँ तक था, ये पेड़ यहाँ तक था, और यहाँ से ऊपर का पार्ट वो गिर करके ये देखिए यहाँ पर आ गया, और रोड ये है. चिल्ड्रन लिफ्टेड द ब्रोकन पार्ट एंड पुट असाइड. प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बच्चों ने उस पेड़ को लिफ्ट करके एक तरफ ले आया. लेकिन जब पेड़ गिरा था तो इस पोजीशन में था. ऑल वेर वेरी थैंकफुल टू दिस ब्रेव चिल्ड्रन. लोगों ने बच्चों को थैंक्स कहा. तो क्वेश्चन यही है, वी हैव टू सोल्व द क्वेश्चन. द क्वेश्चन is based upon Pythagoras theorem. Tree is perpendicular, road is base, and broken part of the tree is treated as hypotenuse. Okay, see the figure carefully. That part, yani broken part, is 5 meter long. The width of road is 4 meter. And question demands, if the width of the road was 4 meter and length of the broken part removed was 5 meter, what was the height of the tree? ट्री का हाइट क्या था, ये हमें फाइंड आउट करना है. एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ द चिल्ड्रन इज डिपिक्टेड हियर. ओके, तो क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे. अब हम लोग आंसर की तरफ चलें. सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फिगर इज हियर. 5 मीटर ब्रोकन पार्ट ट्री का, ट्री इज एंड रोड इज 4 मीटर. लेट a triangle ABC in which BC, the width of road BC is 4 meter. You can write, आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में width of road. मैंने सिर्फ BC लिखा है 4 मीटर, आप ये भी लिख सकते हैं. And broken part of tree AC is equal to 5 meter, which is given in your question. We will use Pythagoras theorem. And we get AC square is equal to AB square plus BC square, as you know. AC H square, AB P square, perpendicular square, and BC base square. So hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Okay, AC is equal to 5 meter. So we will write 5 AB as usual, and BC is 4 meter. So you can write 4 meter. 5 5s are 25. AB square as usual plus 4 4s are 16. 16 को इधर करेंगे शिफ्ट इज इक्वल टू के, तो प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा. 25 minus 16 is equal to AB square. Okay, 9 is equal to AB square. 9 is the perfect square of 3 square.
is equal to AB square, square square cancel. Therefore AB is equal to 3 meter. That part is 3 meter. But we have to find total height of the tree. And broken part is 5 meter and AB part is 3. So we will add AB is equal to 3 meter. Hence total height of the tree is AB, और ये जो AC पार्ट है इसको जो टूट करके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ तक चला आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे. 3 + 5 8 मीटर. ओके, हाइट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वैल्यू of the children is depicted here. Helpful nature. The answer of B part is helpful nature of the children. Okay. See the next question, question number 2. For a Rangoli competition, the 4 participants of the Indira house drew the following rangoli. They drew a regular hexagon of the side 8 centimeter. They drew a regular hexagon of side 8 centimeter and then drew 6 equilateral triangle of the same size. रंगोली कंपटीशन में 4 पार्टिसिपेंट इंदिरा हाउस के जिन्होंने रंगोली बनाया, रंगोली देख रहे हैं आप. दे ड्रू ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड देन ड्रू 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइज. यू कैन सी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 and 6. Okay, what is the question? What is the length of each side of equilateral triangle? Equilateral triangle and regular hexagon, that is why the length of each side is equal to 8 centimeter. So you will write the answer of this question is 8 centimeter. Okay, 8 centimeter क्वेश्चन ये है और आंसर आप खुद से लिखेंगे 8 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन डिमांड्स व्हाट वैल्यू ऑफ द चिल्ड्रेन इज डिपिक्टेड हियर. बच्चों का कौन सा वैल्यू यहां पर प्रदर्शित होता है. तो आंसर क्या लिखेंगे, टीम वर्क. So you will write in your copy team work, or length of each side is equal to 8 centimeter. Okay, so let's proceed. Brain teaser. I will discuss one by one. Question number 1, tick the correct option. Okay, first question number A. In triangle ABC, AB plus BC greater than AB plus BC. As you know, triangle has 3 sides in which 2 sides is given, and we know that the properties of inequalities. What is the properties of inequality? The sum of 2 sides, the sum of 2 sides of a triangle is greater than third side. So AB plus BC is greater than AC. Okay, next you will write in your copy. Okay, question number B. The centroid of a triangle divides each median in the ratio. As you know very well, I have already discussed in previous session, centroid
of a triangle divides its median in the ratio 2:1. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तीनों मीडियन. ए ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस and the point of concurrence of median divides the median in the ratio 2:1, and the concurrence point is known as centroid. You know very well. Okay, 2:1. C, question part C. The hypotenuse of a right triangle is 17 centimeter and one of the side is 8 centimeter. The other side is, so already I have discussed this type of question. It is based upon Pythagoras. First of all, you will draw a right angle triangle. सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, in which you will show hypotenuse 17 सेंटीमीटर. लॉन्गेस्ट साइड को आप 17 सेंटीमीटर दिखाओगे और बाकी जो रिमेनिंग 2 साइड है उसमें से किसी एक साइड को आप 8 मान लोगे. ओके, 8. एंड अदर साइड you can find with the help of Pythagoras theorem. Okay, we will use h square is equal to p square plus b square. तो 8 centimeter is treated as either p or either b. Then other side you can find out. Okay, I know आप लोग सब लोग निकाल लेंगे, आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन को. ऑलरेडी हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर डी. The point of concurrence of the altitude of a triangle is called. मीडियन के पॉइंट ऑफ कंकरेंस सेंट्रोइड कहलाते हैं और एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ कंकरेंस जी यस ऑर्थो सेंटर कहलाते हैं. ओके, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड एंड इन सेंटर. सो पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. अगर कोई प्रॉब्लम हो you can ask me or you can see the book. Okay, question number E. In triangle PQR, if angle PRS is an exterior angle at R, then the interior adjacent angle at R is. So what is this? So see carefully. In triangle PQR, first you will draw PQR, PQR. Okay, if PRS is an exterior angle, okay, at R, okay, then the interior adjacent angle at R is, interior adjacent angle is this, so angle PRQ. So your option is third, angle PRQ. You can see. This option is correct. Angle PRQ. Okay. See the next question. Question number 4 of BT. Okay. In the figure, triangle PQR and SQR are isosceles. Isosceles means two sides are equal. Any two sides are equal as given in the question. Find angle PQR and PRQ. इस एंगल को फाइंड करना है और इस एंगल को एंगल PQR and PRQ. Second, find SQR and SRQ. SQR, S
Q R, that angle SQR, and SRQ, that angle. And last question is find X. You have to find X. Okay, so understand one by one and we will solve. See the figure carefully. Since triangle PQR is an isosceles, with PQ is equal to PR. आइसोसेलेस में PQ और PR इक्वल है, और वी नो दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इफ PQ and PR are equal due to isosceles, then angle PRQ, opposite angle PQR and this opposite angle PRQ and PQR will be equal to each other. Okay. By angle sum property, we get angle P plus PQR plus PRQ is equal to 180 degree. Angle P is 30 degree plus PQR as usual plus PRQ के जगह पर हमने PQR लिख दिया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है. ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री 30 डिग्री प्लस PQR 2 PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. 30 डिग्री को इधर शिफ्ट कर देंगे. 2 एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 30. 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150. सो 2 PQR इज इक्वल टू 150. एंगल PQR बराबर 150 डिवाइडेड बाई 2. We get 75. Therefore, PQR is equal to 75. Hence, PRQ, which is equal to PQR. PRQ is equal to PQR is equal to 75. Hence, PQR is 75 and PRQ is also 75. Again, triangle SQR is an isosceles in which SQ is equal to SR. Triangle SQR is also an isosceles in which SQ is equal to SR. SQ is SR, therefore SRQ is equal to SQR. Angle SRQ is equal to SQR. For which property? Angle opposite to equal sides of a triangle are equal. By angle sum property, we get, see the picture, see the figure. SQR, in which angle S is given 70 degree. So we will apply angle sum property in this triangle. Angle S plus angle SQR plus SRQ, तीनों एंगल को ऐड करेंगे which is equal to 180 degree. See here, angle S plus SQR plus SRQ is equal to 180 degree. Angle S is equal to 70 degree plus SQR प्लस SRQ के जगह पर मैंने नाम SQR लिखा है क्योंकि बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. सो SRQ के जगह पर SQR लिखेंगे इज इक्वल टू 180. 70 डिग्री प्लस SQR प्लस SQR 2 SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. 70 को शिफ्ट कर देंगे. 2 एंगल SQR इज इक्वल टू 180 माइनस 70. 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110. 2 angle SQR is equal to 110
then SQR is equal to 110 divided by 2. We get 55 after dividing. SQR is equal to 55. SQR is equal to SRQ, that is why SRQ is equal to SQR is equal to 55. SQR is equal to 55, therefore SRQ is also 55. First question, second question and third question is find X. See the figure once again. You have to find angle X. Angle X. So we will write angle PQS is equal to PQR पूरा एंगल माइनस SQR. X को फाइंड करना है तो पूरे एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सी द एंगल PQS is equal to angle PQR minus angle SQR. PQS is X. PQR is equal to 75. SQR is equal to 55. 75 minus 55 we get 20 degree. Therefore X is equal to 20 degree. इस तरह से तीनों आंसर हम लोग फाइंड कर लिए. ओके, थैंक यू.